Logical link control. Now we talk about data link layer. What is the aim of data link layer? Our goal in data link layer. Understand the principle behind data link layer services. First point is error detection and error correction. In this layer, we learn about how data we check the error during transmission. Okay, and how we corrected that data. Second is sharing a broadcast channel, multiple access, which means that if I want to send some data to you, so by which method, by which channel, I can send you data without any error or without any collisions. Third point is link layer addresses, how the link layer work with the help of addresses. In previous lecture, we learn about addresses. How many types of addresses we learn about? Two types of addresses. There are 4 types of addresses. Name it. Yes. Physical address, covert or URL. Trans. In this addresses, we learn about physical, logical, or physical, logical. Okay, then in these addresses, we learn about 2 protocols that is known as binding address protocol. Name of that protocols. Example of binding address protocol is there are 2 protocols. Yeah. Yes. ARP, RARP. Yeah. Okay. ARP and RARP. Okay. Then with the help of addressing, how we transfer data with reliable connections and how we transfer data with flow control. The important point is if I want to send some data to you, so with the help of flow control, I can easily send the data to you with some stoppages of sentences, by which with the help of that flow control, you can understand the things. If I say continuously whole lecture in a one sentence, can you understand the lecture? No, sir. No, sir. No, sir. Flow control is important point. In that, by the help of that point, we transfer the data from one end to another end. There are 4 major points. After that, we learn about installation, instantiations, and implementations of various link technologies in this lecture. So what are these technologies? We will see in the next slide. Firstly, outline of our data link layer is introduction and services. Second, we can divide this into 10 points. First is introduction and services. What is the purpose of a data link layer and what is the services used in data link layer? Second is error detection, how we detect the error. After that detection, we correct the error. Then multiple access points, multiple access protocols. If there is a simultaneously, we see that how thousands of mobiles connected in a network, how we identify that this I will calling for this mobile number or this specific number. In see with this in description we see this in mobile access protocols. After that, LAN addressing in ARP-RP, which already upon learn about it, but some updations in this. Next is Ethernet. What is Ethernet and what is Ethernet stands for? After that, bridges, hubs, switches. What is the purpose of that? 3 devices in data link layer. 4 devices, wireless link collections and LANs. In this, we see that. 5th is triple P. What is the full form of triple P? We see in next slides. After that, ATM. Full form of ATM. We use daily in daily life ATM or not?
Automatic teller machine. Automatic transaction machine. Okay, good. And then last is frame relay, which converts the data into frames. This is the major outlines of data link layer. In next slides, what is data link layer? Some technologies, host and routers are nodes in this data link layer. There are host and routers. Routers are identified at blue mark in a form of cross or X, and host are the end devices in this diagram. The laptop is a host, server is the host, normal PC is your host, and normal PC is your host, and your mobile is also your host. These are the hosts which connect with the help of bridges and switches to and form a data link transmission. Okay, that communication channel, by which communication channel we transfer data? There are three communication channel: wireless link, wired link, and LAN. Okay. Third point is frames, and frames are used for transmission of data in data link layer. With the help of encapsulating the frames, we form datagrams. We already see about datagrams, and the new name was PDU. Write down the full form of PDU. Anyone know about PDU? PDU stands for Protocol No, Data Unit. Protocol Data Unit. Protocol Data Unit. In data link layer, PDU is frame. In network layer, PDU is in network layer, PDU is Protocol Data Unit. In data link layer, we talk about frames. In network layer, we talk about Packets. And packets. After that, third layer, node to node. Sir, What? segments. segments. After that, Sessions. next. Presentation. No, we talk about which part of that PDU? Frames. Messages. Yes, messages. Okay, that the main point was data link layer is frames. Network layer is Segments. Packets. packets. Next, Segments. next, messages. Message. Okay, these are the example of protocol data unit in each layer. Okay, what is the purpose of data link layer? Data link layer, it has responsibility of transfer datagram from one node to the adjacent node over a link. Okay, which means that, हाँ, इसका एक अच्छा एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि जैसे हम बोलते हैं ना, जाओ देख कर आओ वो क्या कर रहा है, वो फ्री है कि नहीं है. हम ऐसा बोलते हैं कभी कभी किसी ना किसी को. आप बोलते होंगे, हम बोलते होंगे, कोई ना कोई तो बोलता होगा. ओके, तो डेटा लिंक लेयर का काम ये है कि पूरे नेटवर्क में इन अ फॉर्म ऑफ होस्ट एंड राउटर्स, जब कोई भी व्यक्ति ट्रांसफर करना चाहता है कोई डेटा, तो उससे पहले वो रेडी होता है. ओके, तो हमारा एक फ्रेम पूरे नेटवर्क में गोल घूमता रहेगा, कंटिन्यूस गोल घूमता रहेगा विद द हेल्प ऑफ टोपोलॉजी. जिस टोपोलॉजी से हम कनेक्ट होंगे, कंटिन्यूस गोल घूमता रहेगा. अब कोई बोलना चाह रहा है, 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 अब कोई बोलना चाह रहा है. कंटिन्यूस गोल घूमता रहे. जैसे अगर मैंने बोलूं कि जैसे हम अटेंडेंस लेते हैं, तो आज हमने अटेंडेंस कैसे ली?
जो आएगा वो रोल नंबर बोलेगा और हम करेंगे। एक मेथड ये हुई। ओके, हम जब क्लास में बैठते थे और क्लास में अटेंडेंस लेते थे तो हम कैसे लेते थे क्लास में अटेंडेंस? टीचर रोल नंबर बोलता था, आप प्रेजेंट या एब्सेंट बोलते थे। ओके, से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या करता था, टीचर एक एक को पिंग करता था। ओके, ठीक है। अब डेटा लिंक लेयर करता क्या है कि मैंने आए आप क्लास में, मैंने एक पैकेट छोड़ दिया अटेंडेंस नाम का, जो भी प्रेजेंट है वो अटेंडेंस बोलेगा अपना। तो सीक्वेंशियली मैं रोल नंबर 1 के पास गया नहीं, बट मेरा पैकेट चला गया, वहां से देखा ये नहीं भेजना चाहता, ठीक है, नेक्स्ट वाला बोलेगा, फिर नेक्स्ट वाला बोलेगा, फिर नेक्स्ट वाला बोलेगा। अगर वो भी नहीं भेजना चाहता फिर नेक्स्ट, फिर 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 आखिरी में अल्टीमेटली वो पैकेट मेरे पास आ जाएगा। हाँ, अगर कोई व्यक्ति कोई डेटा भेजना चाहता है इन अ फॉर्म ऑफ देयर अटेंडेंस, प्रेजेंट, एब्सेंट या रोल नंबर का नाम लेके, तो वो डेटा मेरा फ्रेम क्या करेगा, उस डेटा को लेके मेरे पास आएगा और बता देगा अच्छा ठीक है रोल नंबर 10 है सर, ठीक है। अब 11 ने बोला नहीं, 12 ने बोला यस, रोल नंबर 12। तो मेरा कंटिन्यूसली एक पैकेट पूरे नेटवर्क में घूमता रहेगा और वो मैसेज लेकर आएगा इन अ फॉर्म ऑफ देयर रोल नंबर। जैसे अभी हम बात करते हैं तो रोल नंबर के तौर पे। अभी क्या हुआ कि मैं डेटा ट्रांसफर कर रहा हूं सबसे ज्यादा, तो डेटा लिंक लेयर का यूज कर रहा हूं, मैं लगातार कंटिन्यू वे में कुछ बोलता रहता हूं, मैं डेटा ट्रांसफर लिंक का लेयर यूज कर रहा हूं, और सारा फ्रेम्स मेरे पास से आप लोगों के पास पहुंच रहा है इन फॉर्म ऑफ ब्रॉडकास्ट और यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट, किसी भी तरीके से पहुंच रहा है आपके पास में। अब बात यह हुई कि इसी बीच में किसी बच्चे ने एक्सक्यूज मी सर बोला, ठीक है, तो मेरा रिएक्शन क्या होगा, मैं स्टॉप हो जाऊंगा। अब वो फ्रेम उसके डेटा को मेरे पास लेकर आएगा और मुझे सुनाएगा, सुनूंगा, उसके बाद मैं रिप्लाई करूंगा। आप समझे हम प्रैक्टिकली कहां इंप्लीमेंट करते हैं, या इंप्लीमेंट करते हैं इन फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजीज। ओके, तो रिस्पॉन्सिबल है Yes, sir. इसकी डेटाग्राम्स के एक नोड से ओवरऑल नेटवर्क एडजेसेंट नोड्स में। अब यहां पे जो है, अब यहां पे दो चीज हम दिखेंगे, यहां लिंक जो कनेक्टेड है, हमेशा लिंक जो कनेक्टेड होगी वो राउटर से राउटर के बीच में कनेक्ट होगी, या राउटर से सर्वर के बीच में कनेक्टेड होगी, या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच में कनेक्टेड होगी। क्लियर हुई ये चीज? अब यहां पे अगर अज्यूम करते हैं, हाँ बोलो विक्की। नहीं सर, ओके, मैंने आपने बोला ना उसको यस बोला बस। ओके ओके, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ये वाला नोड ए नाम ले रहा हूं और ये वाली लैपटॉप से कनेक्टेड है और उसको कोई डेटा ट्रांसफर करना है, तो जो हमारा पाथ होगा वो हमारा लिंक बताएगा किस पाथ से हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा काम था।